Assalamu alaikum ji. Thank you very much for everyone for coming to this event. I want to thank the media for taking time out. I would like to thank the High Commissioner of South Africa for gracing this event, the Honorary Consul of South Africa to Karachi for being here as well, and of course everyone knows former captain Pakistan cricket team Sarfraz Ahmed. Thank you very much ji for being here as well. This is the beginning of a very historic event ji. This exemplifies a long-standing history that the nation of South Africa has had with Pakistan. ये जो cricket league है जी, this is with a focus of youth in Pakistan. जो underprivileged youth बच्चे हैं, उसमें we are starting a mini tour, जिसमें 16 बच्चे select होंगे. So all 16 kids will then be touring Africa in August, inshallah. इसका जो fundamental purpose है to bring together the youth of South Africa, youth of Pakistan, to bridge our nations together through sport, which is one of the best mediums, ji. So I would like to thank PCB as well for helping endorse this. And without further ado, I would like to please pass the mic on to the Honorary Consul of South Africa to Karachi, Mr. Majid Bashir. Thank you very much, ji. Thank you, Wasif. I would like to take everybody back in history before I say anything more. Nelson Mandela, when he was in prison in Robben Island for 26 years, the day he became a free man, the first time he flew on an aircraft, it was not to Paris, London, or New York. It was to our city of Karachi. So this is a fact that has been ignored for a very long time. And we are here today to recognize that journey of Nelson Mandela's to Pakistan. I will quote some words from Nelson Mandela. And he said, "Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair." So we are starting this program, and I thank His Excellency, the Ambassador of South Africa. I thank the Pakistan Cricketing Board for their help and cooperation. And without the help of the Trans Group, this would not be possible. So thank you for coming, and let's have fun and let's do this for the kids of Karachi. Thank you very much. I'd like to pass the mic on to His Excellency, if he would like to say any words regarding this event. Thank you very much, Wasif. Before I go to any length and make a long 1-hour speech, I just want to thank Mr. Majid Ahmed for taking a dream that I had or that I have forward and organize this venture. Again, to lash on just what he said and what
guided by the quote that our former President Nelson Mandela, by the quote of his words. In his book, he said, I quote, "Jinnah is a constant inspiration for all those who are fighting against racial or group discrimination." He also had unflinching respect for Pakistan's principled stance against apartheid. Hence, he came to visit Pakistan, one of the few countries he visited twice, both before he became state president and as if to say goodbye when his term ended, or let's put in other words, when he decided to step down. There's a difference, and fundamental. Later on, formal diplomatic relations in '94 between Pakistan and South Africa, as you all know, were established. The rest is history. I'm here now as High Commissioner for South Africa in the Islamic Republic of Pakistan, continuing with that order that relations between Pakistan and South Africa should never be broken. I am standing on the shoulders of other ambassadors who endeavored and tried to do this kind of, or build these relations. I'm really happy that when I do leave, I shall have started something together with the help of Mr. Majid Ahmed that will go a long way in creating an environment of dreaming big to those children that are underprivileged, who would be able to think beyond their villages, who would most probably be in a bus for the first time en route to Karachi Airport. It is for this reason that I requested the endorsement of the grandson of our icon Nelson Mandela, called Mandela, to endorse these two. So it is something that goes right into the heart of, if there is something like that, the heart of the Mandela legacy. So please, anyone who has even the energy to clap hands to this kind of initiative, please do. That will help us all. That will help us go into the future with certainty that there will still be people who think about these two countries, from these two countries. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, for your wise and kind words. Now, Ji, I would like to introduce someone who needs no introduction. Former captain of Pakistan, Champions Trophy winner, Captain Sarfraz Ahmed, who has kindly accepted to be the brand ambassador for this initiative. So he is going to be the face of this program, mashallah se, and he will be the source of hope that these kids see. And I'm very grateful to him for being here and for taking on this role. And I would like to please invite him to share a few words on this initiative. Thank you very much, Ji. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माजिद साहब का और जो हमारे एम्बेसडर हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे इनवाइटेड किया और एज अ ब्रांड एम्बेसडर जो है अपनी इस जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए। तो सबसे पहले ये कि इनका इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। आई थिंक उनके लिए उन्होंने अंडर 19 लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करने जा रहे हैं कि जो पूरे कराची से जो है वो लड़कों के ट्राइल्स लेंगे, उसके बाद उनकी
4 टीमें बनाएंगे और उसके बाद जो एक 15-16 बच्चों का पूल बना के उनको लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका जो है केप टाउन और डरबन में लेके जाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और बच्चों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उससे फ़ायदा उठाएं। और कराची के बच्चों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव से कराची के बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू। Thank you very much, Ji. I would like to pass the mic on. Would you have any questions, Ji? His Excellency, it's a good move to actually invite the underprivileged children from Pakistan to South Africa and make a team of it. I remember that in 1993, after the apartheid era, when it ended in 1991, Pakistani cricket team visited South Africa. I still remember that, and we had very good relationship with them. What will be the criteria for selecting the players? Because it's a good move with the collaboration of Transmedia Group. What will be the criteria for selecting the players? Transparency should be there. बिल्कुल आपका इकबाल भाई बहुत ही, कल भी जब मैं गया था तो उन पे यही बात हो रही थी कि भाई क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा। देखिए क्राइटेरिया तो पहले तो उनकी कोशिश ये है कि उन बच्चों को सिलेक्ट करना है जो कि किसी भी लेवल पर जिन्होंने कोई नुमाइंदगी नहीं की, वो ऐसे टैलेंटेड बच्चे जिनको अंडर-19 लेवल पे मौका नहीं मिल पाया हो या अपने किसी रीजन लेवल पे, तो ये ओपन ट्रायल कोशिश करेंगे कि जो 7 जोन्स हैं वहाँ के जो जोन के जो भी इस वक्त नुमाइंदगान हैं उनको ये मैसेज भिजवाया जाएगा जो भी आपके अंडर 16 से लेकर 19 तक के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर भेजें। ऑब्वियसली ये कोचेज जो है उसके बाद ये हायर करेंगे, मेरे ख्याल से 4 से 5 जगह पे जो है वो ओपन जो है वो ट्रायल होंगे और वहाँ से जब वो तकरीबन 60 बच्चे, इनका इरादा है कि वो 60 बच्चे सिलेक्ट करके उसके बाद उनकी 4 टीमें बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो एक 16 रुकनी टीम बनाएंगे जिसको ये अगस्त में साउथ अफ्रीका लेके जाएंगे। तो जो आपने बात की अभी कोशिश करेंगे कि फेयर ट्रायल्स हों और हर बच्चे को पूरा मौका मिले। योर एक्सीलेंसी, गुड इवनिंग। Thank you very much for supporting this cause. I want to ask you whether this will be a one-off thing and why cricket? Why not football? Because football was also close to Mr. Nelson Mandela's heart and you hosted 2010 Football World Cup as well. Well, every move starts with the first step. Something must happen first. And to be honest with you, we tried and we are still working on the football team coming from South Africa to Pakistan. And well, Nelson Mandela was a fan of all sports, but the closest was boxing. He was a boxer. So I hope I answered your question. And I hope by the time we are able to get the team. Actually, it was on the verge of arriving here in November last year. But unfortunately, 2 things happened. One was a big match that was to take place in Islamabad that caused us to postpone. And the consequence of that, we lost tickets. They were bought, everything was ready. And then, of course, coupled with that was the airline that we booked that had difficulties with taking these kids on board without COVID-19 vaccination certificates. In fact, those days already there was nobody who cared about it. So that's why it was an oversight. So we are still working on that, getting new tickets and so on and so forth. Unfortunately, you know, sponsors who sponsored this, we can't ask them again, unfortunately. So we're trying to work around that one. I would love that every sports coach comes here, or, you know, those are kind of exchanges. Thank you. Thank you very much. Thank you for your questions. Is anyone else? Okay. सैफ भाई, ये अंडर 19 के बच्चे होंगे, इनको वहाँ पर लेके तो जाया जाएगा, तो क्या वहीं पर रिस्ट्रिक्टेड होगा या आगे इनको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट या इस तरीके की कोई चीज़ होगी ताकि इनको प्रॉपर अम्ब्रेला में रख कर ग्रूम किया जाए और ये फिर पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे या फिर साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट के लिए इनके चांसेस हो? देखिए, एक तो इनका कॉन्सेप्ट यही है कि इन बच्चों को जो है ना वहाँ पर लेके जाएं और आई थिंक ये पहला स्टेप है। इंशाल्लाह अगर ये हमारा जो बात हुई है, जो अगर स्टेप सक्सेसफुल हुआ
तो उसको इनिशिएटिव इसको और आगे भी बढ़ाएंगे। देखें इससे बहुत फ़ायदा ही होगा जो बच्चों को मौका नहीं मिला। आई थिंक देखें एक्सपोजर मिलेगा आपको, पूरा एक प्रॉपर इनका कैंप लगेगा, उसके बाद फिर टीम में साउथ अफ्रीका जाएगी, वहाँ पे जो नेल्सन मंडेला के जो वहाँ पे लोग हैं वो उनको जो है वहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे। तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये इनका फर्स्ट स्टेप है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये फर्स्ट स्टेप हमारा कामयाब होता है तो डेफिनेटली इसको ये और आगे भी बढ़ाएंगे। सरफराज, आप खुद एज ग्रुप क्रिकेट से ग्रेजुएट करके ऊपर आए, तो कितना फ़ायदा होता है अंडर 19 अंडर 16 लेवल पे इस तरह के मौके मिलना? और साथ साथ हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी शाहीन्स के ए टीम के या अंडर 19 टीम के टूर्स होने चाहिए साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड वगैरह के, तो इस तरह के टूर्स और आप समझते हैं कि जिनको करना है वो भी करें? देखें बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है फैज़ान भाई, और यही टाइम होता है जब बच्चों की ग्रूमिंग का टाइम होता है, क्योंकि अंडर 19, 15, 17 यही टाइम होता है जहाँ पे बच्चा जो है वो ग्रूम होता है और खेलता है। और जितने ज़्यादा बाहर के टूर होंगे उतना ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा और आइडिया होगा पाकिस्तान से बाहर खेलने का। तो आई थिंक ये पहला स्टेप है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह के ऐसे और भी स्टेप, वैसे अभी आपने देखा पाकिस्तान की 19 की टीम बांग्लादेश गई हुई है, पाकिस्तान शाहीन जो है वो जिम्बाब्वे में आज खेल रही है। तो ऐसे टूर्स होते रहेंगे तो इससे हमारे पास जो है बैकअप प्लेयर जो है बेंच पे मौजूद रहेंगे पीछे भी। Thank you very much, Ji. I think we have time for one more question. हेलो सरफराज, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप पाकिस्तान के अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन थे, आपको इन्होंने लिया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी कप्तान भी आप रहे। एक सवाल इससे जेहन में आ रहा है कि अंडर 16 अंडर 19 इस लेवल पे मेन टीम में भी पाकिस्तान और ख़ासतौर पे कराची के जो लड़के हैं उनके साथ ज़्यादती होती है, तो अब ये सारे कराची के टैलेंट पे अगर इनकी नज़र है और यहाँ से ये टीम ग्रूम कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इससे जो कराची का टैलेंट नज़रअंदाज हो जाता था अब नज़रअंदाज नहीं हो पाएगा? माजी में इमरान ताहिर को देख लें, वो जाके जनूबी अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो अगर इससे होगा तो हो सकता है हमें तो टैलेंट मिले ही मिले, जनूबी अफ्रीका को भी पाकिस्तानी टैलेंट मिल जाए। साथ आपसे ये पूछना चाहूँगा, 2017 की बार बार बात होती है, उसका हेड कोच आ गया, उसके कप्तान अभी तक टीम से बाहर हैं, किसी भी सूरत में आप समझते हैं कि अब जो वर्ल्ड कप होना है वहाँ पे सरफराज होने चाहिए? अवाम तो चाहती है, खुद सरफराज क्या वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं? देखिए पहले तो मैं माजी साहब का आई थिंक इस इनिशिएटिव पे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सारा इनिशिएटिव इन्हीं का है कि कराची के बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो कि बाहर जाकर खेलें। आई थिंक सर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक अगर बात खेलने वाली देखें, खेलने जब तक बंदा खेल रहा है उसके बाद खेलने का ख्वाहिश क्यों नहीं होती? सबको होती है। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू what this brings, and inshallah it'll be a wonderful event. Inshallah. Thank you.